Hello students, I'm your social science teacher and this is grade 4, chapter 2, Great Mountains. In this chapter, we are going to study about the great mountains that exists in our country. A great arc of mountains consisting of Himalayas, Hindu Kush and Patkai range define the northern India subcontinent. These were formed by the ongoing tectonic collision of the Indian and Eurasian plates. The mountains in these ranges include some of the world's tallest, which act as a natural barrier to cold polar winds. They also facilitate the monsoon winds, which in turn and influence the climate in India. Rivers originated from these mountains flow through the fertile Indo-Gangetic plains. In the northern mountains, the Himalayas is the highest mountain. Northern mountains में हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है. कहाँ से स्ट्रेच करता है वो? जम्मू कश्मीर से लेकर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, वहां तक ये स्ट्रेच करता है. हिमालयन माउंटेन रेंज एक बहुत ऊंचे दीवार की तरह हमारे कंट्री में फंक्शन करता है, जो कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया को बनाता है. तो एक दीवार की तरह वो यूज होता है. इनफैक्ट दीवार की तरह वो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करता है. एंड इट इज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन India and China, Nepal and Bhutan. Then in the northeast, it runs southwards and forms a barrier between India and Myanmar. And here the mountain ranges are not very high and are known as Purvanchal. इस एरिया के हिल्स के क्या नाम है? गारो हिल्स, खासी हिल, नागा एंड मीजो, जो कि बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं है. नॉर्दर्न माउंटेन्स के जो पीक्स होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर स्नो में कवर्ड होते हैं. Himalayan range is considered as the highest and Mount Everest is its highest peak. On the Nepal-China border, Mount Everest is the highest peak और उसकी जो height है वो कितनी है? 8,848 meters and it is the highest in the world. Other important peaks in the Himalayan range are Kanchenjunga, Nanda Devi, Dhaulagiri, Nanda Parbat, Makau and Annapurna. और इनके जो हाइट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं. पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे माउंटेनियरिंग के लिए आते हैं, जैसे कि तेंजिंग नॉर्वे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड. दे वर द फर्स्ट men to climb the Mount Everest. Bachendri Pal, a college lecturer, was the first Indian woman to climb Mount Everest, and the Himalayan mountain ranges can be divided into 4 zones: Himadri, Himachal, Shivalik, the Terai or the Marshe land of Uttar Pradesh. अब ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं इनको हम अच्छे से देखेंगे. हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालयस क्या है? इट इज द रेंज दैट लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ. It is also the highest range of the Himalayas and average height is 6,000 meter above the sea level. Mount Everest, Kanchenjunga, Annapurna ये loftiest peak है इस रेंज के, सबसे ऊंचे पीक्स हैं इस रेंज में. कंचनजंगा कहाँ पर है? नेपाल सिक्किम बॉर्डर पे. एंड बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं इस रेंज में. रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, ये इन्हीं ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट करते हैं. उसके बाद हिमाचल या लेसर हिमालय, ये साउथ ऑफ हिमाचल पे है एंड ड्यू टू लोअर इन हाइट बट रेगुलर स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर सीजन. इसकी एवरेज हाइट है 3500 मीटर्स अबव द सी लेवल. कुछ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हैं यहाँ पे, जैसे कि गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगांव, शिमला, नैनीताल, मनाली, दार्जिलिंग एक्सेट्रा. Rivers form waterfalls as they flow down the mountains. The slopes of this region are again covered by valuable forests such as pine, chirak, deodar and fir. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं शिवालिक या लोअर हिमालयस के बारे में. ये जो रेंज है ये हिमालयस के बेस में है and it is very low lying. This area receives very heavy rainfall and थिक फॉरेस्ट्स होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स, लेपर्ड्स, बियर्स, सांभर एंड क्रोकोडाइल्स. देन उसके बाद है तेरई या फिर मार्शल लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश. फुटहिल्स ऑफ शिवालिक आर नोन एज तेरई. मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाइज इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश. It receives a very heavy rainfall. Large part of this area was once a marshal land and hard thick forest. Now the forests have been cut. इस एरिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट.
उसके बाद passes of mountains. People in this region live mostly in the villages. Valleys are the low wild area surrounded by hills or mountains, and these are known as passes through which people can cross these mountain ranges. कुछ यहाँ पे पासेस के नाम दिए गए हैं, जैसे कि बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में, रोहतांग पास एंड सिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश, नाथुकला पास इन सिक्किम। नेक्स्ट पोर्शन है चैप्टर का, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हिमालयस के इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट फॉर्म्स अ नेचुरल वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, रेन bearing monsoon clouds protect us from cold winds coming from north. Then there are rivers that come down from Himalayas. Then they have forests that provide us valuable wood and herbs, many hill stations, and a natural farm for many wild animals. Now we'll see life in the northern mountains. नॉर्दर्न माउंटेन्स में क्या क्या एरियाज हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स। लाइफ इन द माउंटेन्स बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता है। लोग ज़्यादातर यहाँ पे वैलीज में रहते हैं और उनके घर वुड से बने जाते हैं और उनके रूफ जो है दैट इज़ अ वेरी स्लोपिंग रूफ। उसके बाद नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल वैली एंड इट इज़ वन ऑफ द most popular tourist place of our country, and it is known as heaven on the earth. Some people also say Switzerland of India. Natural beauty जो है उसकी उनको attract करती है tourists all over world से। And then in the Dal Lake at Srinagar, boats are known as houseboats. आपने houseboats के बारे में अपने पुराने chapters में पढ़ा है, वो यहीं पाए जाते हैं श्रीनगर में। Main occupation of the people is farming, and people do terrace farming over here. Kashmir is quite cool in summers and very cold in winters. The Kashmiris use kangris. Kangris होते हैं छोटे pots होते हैं जिसके अंदर जलते हुए कोयले रखे जाते हैं और उससे वो अपने घरों को और खुद को वार्म रखते हैं। आदमी और औरत यहाँ पे ज़्यादातर फिरहन या सलवार पहनते हैं और जो सेलिब्रेट किए जाते हैं फेस्टिवल्स वो है ईद, शिवरात्रि, और यहाँ के लोग कहवा पीते हैं जो कि एक अलग तरीके की चाय होती है। समर सीजन में ज़्यादातर लोग फील्ड्स में काम करते हैं और विंटर्स में ज़्यादातर लोग घरों में रहते हैं, क्योंकि यहाँ के विंटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं, इसलिए तब बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं और देयर आर सर्टेन पीपल हु वीव सिल्क। Carpets and shawl of Kashmir are very famous. Then there are a lot of tourist places in Kashmir, and then such as Srinagar and Dal Lake and a lot of other places. The next state that we are studying about is Himachal Pradesh. The lifestyle of the people of Himachal are mostly as same as the Kashmir people, and they grow rice, maize, barley, fruits and vegetables. Some rear sheep and goats, woolen carpets, blankets, rugs and shawls are woven over here. Shimla is the capital city, and thousands of people, thousands of tourists visit this city every year during the summers. Dalhousie, Kullu Manali are various other hill stations in the area. यहाँ पे लोग क्या पहनते हैं? Men wear embroidered cap and women wear silk scarves. Dussehra is the main festival of the Kullu region, and people basically speak Pahari, Punjabi and Kinnauri languages. Uttarakhand. Uttarakhand includes the Garhwal and Kumaon hill region. Dehradun is the capital. Most of the people here are farmers. Many of them are also serve in the army. Mussoorie, Nainital and Ranikhet are popular hill stations. हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये ज़्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस हैं और जो कि बहुत फेमस है। अगला हम स्टेट्स देख रहे हैं, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। Sikkim is a very small state and it has high mountains and deep river valleys. People here belong to three main tribes, Lapcha, Bhutia and Nepali. अगर औरतों के पहनावे के बारे में देखें तो कलरफुल ज्वेलरी, सिल्क और गोल्ड एंड बीड्स ये पहनते हैं। And Sikkim is again famous for beautiful orchids. The capital of the state is Gangtok, Darjeeling and West Bengal, and the popular hill stations over here. एक और चीज़ जो यहाँ पे फेमस है वो है टी गार्डन। दार्जिलिंग के चाय के बागान बहुत ज़्यादा फेमस है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Arunachal, and Mizoram are 7 states, and they are known as Seven Sisters. Arunachal Pradesh is the largest state in the northeast, and it however has small pollution. Itanagar is the capital of the state. People live in stilts that they protect from rains and snakes. Farming and weaving are the main occupation of the people of Manipur, and they also make colorful things from bamboo, cane, and leather. Manipur dance is a very famous form. Then we study about Meghalaya, which gets the heaviest rainfall in the country. People of the state belong to the Garo, Khasi, and Jantia tribes. They grow rice, jute, potato, sugarcane, pineapple, and oranges. Mizoram means lands of hills. As well as the capital city, agriculture is the main occupation of the people. The capital of Nagaland is Kohima, and rice, maize, millets, and oranges are grown over here. So basically, what have we studied in this chapter, children? Mountains are the natural barrier to the cold polar winds. Himalayas is the highest mountain in the world, which lies in north part of India. Mount Everest, Mount Godwin, Austin, Kanchenjunga, and Annapurna are some highest peaks in the Himalayan Karakoram ranges. In winters, people of Kashmir stay at home and make handicrafts, and women of Sikkim wear long skirts called baku with jewelry of gold and beads. That was all for this chapter, and I hope you enjoyed it. Thank you so much.